Hello friends, welcome in our YouTube channel Fun with Studies. So, today we are going to study about solar system. See, solar system is very interesting topic. We all like that, this topic. हम सबको ही ज्यादातर पसंद ही होगा ये टॉपिक क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे पढ़ने में बहुत मजा आता है. See, we can't imagine that how Earth look like in reality. हमें पता है अर्थ कैसा दिखता है बट हमने सामने से तो उसे देखा नहीं है रियल में, तो हमें बहुत क्यूरियोसिटी होती है उसके बारे में जानने की. तो हम क्या करते हैं, आज हम इससे ही रिलेटेड पढ़ेंगे. So we are going to study about solar system and topics related to it. So for that, first we have to get a 3D view of it. तो उससे पढ़ने से पहले हम उसका 3D व्यू देखना होगा. तो मैं आपको जा रही हूँ उसका 3D व्यू दिखाने. See, it's 3D view. It's sun. Okay, sun. Then sun. See, these are planets. After Sun, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and then Neptune. And Pluto is not counting in planets. Pluto को हम planets में count करते ही नहीं है. So Pluto is not a planet now. 2006 तक वो था पर 2006 में उसे planet से हटा दिया था. चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में. और क्या आपको दिख रहा होगा, ये है सन. अब हम इनकी बारे में इनके टॉपिक से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी देयर फैक्ट्स. So first, details of planets. It is our sun. See, these are details of sun I have collected yet. ये जो details है sun की जो मैंने अभी तक collect की है. तो हम चलेंगे पढ़ते हैं. Sun is a solar system star. Sun solar system का star है. And by far its chief component. और वो दूर भी है उसकी chief component. So the sun is a type G. Sun G2 type वो G2 type का है. Main sequence star हो गया. Compared to the majority of stars in the Milky Way. मतलब G2 मेन सीक्वेंस स्टार्स का है. वो कंपेयर मतलब अगर उनके साथ कंपेयर करेंगे मिल्की वे के स्टार्स के साथ के. द सन इज वेदर लार्ज एंड ब्राइट. उनसे कंपेयर करने में भी नहीं तो वैसे ही सन बहुत लार्ज है. इट इज एंड ब्राइट. द ग्रीक और ये इन लैटिन सोलर इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड इज बाय फार द मोस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. ये सोलर सन बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ के लिए. तो हमें पता ही है लाइफ ऑन अर्थ. इट इज नियर बाय पर्सन इन स्फेरिकल बॉल. आपको पता ही होगा वैसे वर्टिकल में थ्री शेप सर्कल का स्फेरिकल होता है ना. थ्री शेप तो इसमें बोलता है स्फेरिकल बॉल. मतलब बॉल भी स्फेरिकल होती है. हॉट स्टार्स मतलब गर्म तारे विद इंटरनल मोशन दैट जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड. अंदर की मोशंस के साथ जो जनरेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड. ओके, we are Dimorphos. Its diameter is about 109 times that of Earth. से इतना ज़्यादा है इसका diameter. And it has a mass about 330 times that of Earth, accounting about 99.86% of the total mass of the solar system. About 3/4 of the sun's mass consists of hydrogen. The rest is mostly helium, with much smaller quantities of heavier elements including oxygen, carbon, neon and iodine. Okay, so topic कंप्लीट हो गया. अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देती हूँ जो आप अगर आप किसी को लिखोगे भी या कोई पूछेगा सन के बारे में कुछ फैक्ट. तो एक फैक्ट आपको ये बताना है. सन स्टार है सोलर सिस्टम का. स्टार ऑफ सोलर सिस्टम. source of solar energy for us. Sun is rather large and bright.
back to Sagittarius and its diameter is about 109 times that of Earth. Okay, now our next topic is Mercury. Wow, Mercury is also very nice, and Mercury is one of 4 terrestrial planets in solar system. Mercury solar system आपको पता है सोलर सिस्टम में 4 planets ऐसे हैं जो terrestrial मतलब जमीन ये अर्थ में हमारी जमीन है लैंड से संबंधित होता है, लैंड से जुड़ा हुआ है जो है। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड से ही होते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मतलब लैंड वाले एनिमल्स। तो मर्क्यूरी भी एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है एंड इज अ रॉकी बॉडी लाइक अर्थ। उसकी रॉकी बॉडी मतलब रॉक से बनी हुई मतलब पत्थरों से और वैसे बॉडी है अर्थ की तरह। इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉल प्लैनेट सबसे छोटा प्लैनेट है विद एन एक्यूरेट रेडियस ऑफ 2.439.7 kilometers. Okay. Mercury is also smaller, albeit more massive than the largest natural satellite in the solar system, Ganymede and Titan. Okay, Mercury consists of approximately 70% metallic. Mercury consists करता है मतलब उसमें है approximately 70% metallic है और फिर 30% है silicate material. Mercury's density is the second highest in the solar system. Mercury की डेंसिटी हाईएस्ट मतलब सेकंड नंबर पे आता है डेंसिटी के डेंसिटी ज़्यादा में सोलर सिस्टम में मर्क्यूरी सेकंड नंबर पे, ओनली स्लाइटली लेस देन अर्थ डेंसिटी ऑफ 5.5 GCM3. If the effect of gravitational comparison were to be factored out, the materials of which Mercury is made would be denser with an compressed density of color 5.3 GCM3 versus Earth's 4.4 GCM3. Mercury's density can be used to infer details of its inner structure, although Earth's high density results expectable from gravitational comparison. Particularly at the core, Mercury is much smaller and its inner regions are not as compressed. For it to such a high density, its core must be large and rich in iron. Mercury के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ. Mercury is one of 4 terrestrial planets in the solar system. वो एक terrestrial planet है और उनमें आता है 4 terrestrial planet में और उसकी अर्थ की तरह रॉकी बॉडी है और वो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का. और मर्क्यूरी रिच है मतलब मर्क्यूरी के पास ज़्यादा है आयरन, उसमें अच्छा है मर्क्यूरी आयरन में, हाई डेंसिटी की में वो सेकंड नंबर पे आता है. देन वीनस is the second planet from the sun. Venus second planet है सन के बाद क्योंकि मर्क्यूरी आता है फिर वीनस आता है, तो वीनस सेकंड नंबर का प्लैनेट है. Orbiting it every 224.7 Earth days. It has the longest rotation period, 245 days, of any planet in the solar system, and unusually rotates in the opposite direction to most other planets. It has no natural satellite. It has named after the Roman goddesses of love and beauty. After the moon, it is the brightest natural object in the night sky, reaching an apparent magnetic of bright enough to cast shadows because Venus is an inferior planet from Earth. Okay. It never appears to venture far from the sun. Its elongation reaches a maximum of 47.8 degrees. Venus is a terrestrial planet Venus is also a terrestrial planet and is sometimes called Earth's sister planet. Venus को कभी-कभार हम बोलते हैं अर्थ का सिस्टर प्लैनेट क्योंकि Venus जो है ना वो अर्थ जैसा ही है क्योंकि वो टेरेस्ट्रियल भी है और वो अर्थ के जैसा ही है ज़्यादातर. अब मैं आपको बताती भी हूँ क्यों. बिकॉज Venus is an Earth sister planet. बिकॉज क्यों है वो सिस्टर प्लैनेट अर्थ का, उसे क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर साइज, उनके सिमिलर साइज के लिए, और मास प्रॉक्सिमिटी टू द सन एंड बल्क कंपोजिशन. ओके, दीज 4 रीजन
It is radically different from Earth. In other respects, it has the densest atmosphere of the four terrestrial planets, consisting of more than 96% carbon dioxide. The astronomical pressure at the planet's surface is 92 times that of Earth. Okay, 92 times that of Earth. With a mean surface temperature of 735 K. 462 Celsius and 863 F. Venus is by far the hottest planet in the solar system. Venus जो solar system का सबसे hottest planet है, even though Mercury is closer to Sun, पर जबकि even तो मतलब जबकि अर्थ सन से ज्यादा क्लोज है मर्क्यूरी, बट फिर भी वीनस हॉटेस्ट प्लेनेट है, सेकंड नंबर पे होते हुए। सी हाउ, अब आप सोचिए कैसे। क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रिवेंटिंग इट्स surface from being seen from space in visible light. It may had oceans in the past, but these would have vaporized as temperature rose. Due to runaway greenhouse effect, the water has most probably photo-dissociated, and because of the lack of a planetary magnetic field, so free hydrogen has been swept into interplanetary space by the solar wind. Venus's surface is dry desert, scape interspersed with slab-like rocks and periodically represented by volcanoes. जैसे हम हिंदुस्म बोलते हैं, इसमें volcanism मतलब volcano से ही related है. Then Earth is our planet. Earth is the third planet. See, Venus के मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ. Venus के पॉइंट की, Venus is the twin of Earth. Venus is the twin of Earth. Venus is the hottest planet. Venus is the second planet from Sun. Okay. Then see these 3 points. Facts about Venus and Earth. Earth is our planet. Earth in Greek, Theia or Latin. Terra is the third planet from the Sun. Earth the third planet है Sun से. The densest planet in the solar system. Densest planet है और solar system में. The largest of solar system 4 terrestrial planets. Earth सबसे ज्यादा terrestrial में है, rich है. जो 4 planet है terrestrial, उन सब में से सबसे ज्यादा richest है Earth. And the only extraterrestrial object known to harbor life. Earth एक only planet है जिसपे life possible है, जिसमें हम रह रहे हैं. According to evidences from radiometric dating and other sources, Earth was formed जब फॉर्म हुआ था 4.54 billion years ago. Earth gravitationally interacts with other objects in space, especially the Sun and the Moon. During one orbit around the Sun, Earth rotates about its own axis 366.26 times, creating 366.26 solar days or one sidereal year. Earth's axis of rotation is titled 23.4 degrees away from the perpendicular of its orbital plane, producing seasonal variations on the planet's surface with a period of one tropical year. 365.24 solar days. Okay, the Moon is Earth's only permanent natural satellite. Moon अकेला है Earth की permanent natural satellite. Its gravitational interaction with Earth causes ocean tides. मून का जो अर्थ के साथ ग्रेविटेशनल कनेक्ट है ना, उसकी वजह से ही ओशियन टाइड्स होते, लहरें आती हैं और बाकी सब होता है अर्थ एक्सिस एंड ग्रेजुअली स्लोस अर्थ रोटेशनल राइट. अर्थ के बाद अर्थ तो अपना ही प्लैनेट है जिस पर अपन रहते हैं, तो उसके बारे में तो ज्यादातर फैक्ट्स अपन को पता ही होना चाहिए. तो पहला फैक्ट, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ. अर्थ इज blue colored and blue, green and red color planet. Earth formed about 4.54 billion years ago. Then Earth's twin is Venus. Okay. And Earth have 365 solar days. Earth has its own natural satellite, its moon. These are 5 facts.
Then moon. The moon, geek, Earth, Bell, Seren, Light and Luna is the Earth's only natural satellite. मैंने अभी आपको बताया था fifth fact. Earth की एकलौती is only natural satellite है moon. It is one of the largest natural satellites in the solar system and among planetary satellites. The largest relative to the size of the planet it orbits its primary. It is the second densest satellite among those whose densities are known after Jupiter's satellite. The moon is thought to have formed approximately 4.5 billion years ago, not long after Earth. There are several hypotheses for its origin. The most widely accepted explanation is that the moon formed from the debris left over after a giant impact between Earth and a Mars-sized body called Theia. Okay, Theia. Okay, the moon is in synchronous rotation with Earth. Okay, always showing the same phase. With its near side marked by Earth. Dark volcanic media that fell between the bright ancient crustal highlands and the prominent impact craters. It is the second brightest regularly visible celestial object in Earth's sky after the Sun as measured by brilliance on Earth's surface. Although it can appear a very bright white surface, it actually dark. Okay. It is slightly higher than the ones as flood. It prominence in the sky and is regular cycle of phases have since ancient times made the moon an important culture influence and language, calendars, art and mythology. Key facts about moon. Some facts about moons are moon is beautiful. और मून जब फॉर्म हुआ था तो अप्रोक्सीमेटली मतलब कम से कम उससे अगर अप्रोक्सीमेटली ये अभी तक पूरा नहीं पता कि मून कब फॉर्म हुआ था बट इतना पता है 4 बिलियन ईयर्स नॉट मतलब अर्थ से ज्यादा पहले फॉर्म नहीं हुआ होगा वो जब अर्थ हुआ होगा जब भी हुआ होगा चलिए so now I'm cleared the topics now I'm cleared I'm going to name them sun we have cleared them and the facts we also cleared them I can explain the sun topic mercury I'm explaining it and we can clear them and know the facts of mercury then we can also clear venus and its facts and explanation is also done then earth is also clear and its facts and explanation is also done moon also clear facts explanation is also done so there are 5 topics we have cleared and left topics Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, left Pluto. Now topics are left. These are 5 because ये जो 5 planet बचे हैं इन्हें ही हम planets में गिनते हैं प्लूटो को नहीं गिनते उसे 2006 तक ही गिनते थे अब हम उसे ड्राफ्ट planet पे गिनते हैं ड्राफ्ट ओके और मैं आपको बताऊंगी कि क्यों नहीं गिनते मैं आपको उस अगले वीडियो में बताऊंगी बट अभी इतना है कि पार्ट 2 में बताऊंगी मैं इतने ये सब जो बचे हैं टॉपिक इन्हें मैं पार्ट 2 में क्लियर करूंगी और प्लूटो को अभी तो हम ड्राफ्ट प्लैनेट कहते हैं तो पार्ट 2 देखने के लिए आपको इस वीडियो को बहुत शेयर करना होगा लाइक करना होगा और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना होगा तो अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर इसमें बहुत ज्यादा लाइक्स आएंगे तभी पार्ट 2 बनेगी और मैं पार्ट 2 जल्दी ही डालूंगी ओके थैंक यू